Good morning, 11th class. We are on our chapter number 7 of History, Changing Cultural Traditions, and we are towards the end of the chapter. And throughout the chapter, we have actually seen कि कितने सारे changes आए थे बेसिक जो लोगों की सोच थी उसमें और रिवाइवल ऑफ रोमन सिविलाइजेशन और कल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस था और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दैट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वी सॉ फ्यू ग्रेट स्कॉलर्स जिन्होंने अपने को ये बताया था कि if we talk in terms of history, that history should not only be studied in terms of politics या state से related, but it should be studied in totality, यानी कि पूरा culture और आर्ट आर्किटेक्चर पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट जो वो कैसे डेवलप होना चाहिए। और इसमें अपने को बेसिकली इन्होंने ये भी बताया था कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड एक इंडिविजुअलिज्म पे फोकस होगा। मतलब अर्लियर क्या था कि ओनली पीपल फॉलोड वॉट एवर वॉज सेड बाई द चर्च एंड द रिलीजियस अथॉरिटी, बट नाउ पीपल आर थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स। ठीक है। एंड देन वी डिड अबाउट ग्रेट स्कॉलर्स, ग्रेट पेंटर्स और ग्रेट स्कल्प्टर्स। एंड देन कि इस टाइम पे प्रिंटिंग आ गई थी जिसके कारण थिंग्स बिकेम इजीली अवेलेबल फॉर द पीपल टू रीड और एंड इंटरप्रेट बाय देमसेल्व्स। उसके बाद न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आया था कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स जो है दे कैन लीड अ गुड लाइफ। मतलब अर्निंग मनी वाज नॉट कंसिडर्ड समथिंग बैड। ऑब्वियसली अगर आप you it does not mean that you are irreligious, or obviously we should not use wrong ways and means, but एक individual जो है they can lead their life very very nicely as well. Then about women, we had certain ideas ki what was the condition of the women, and basically the condition was not that good. And what were their aspirations, and few exceptions who actually proved that women could also read and write and were scholarly people. Okay. उसके बाद हमने पढ़ा था एक टॉपिक डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड टॉपिक विच led to there because of so many changes in the existing Christianity, which in which most of the practices, or at least some of the practices, were very, यू कैन से करप्टेड। तो जिसके कारण लोगों ने, बिकॉज अब प्रिंटिंग आ गई थी एंड पीपल कुड रीड बाइबल, सो नाउ दे क्वेश्चन वॉट एवर द चर्च हैज बीन टीचिंग देम। एंड ऑब्वियसली इसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जिनका नाम पढ़ा था वॉज मार्टिन लूथर। और उसके बाद कैसे फाइनली हमने देखा कि चेंज आ गया था एंड क्रिश्चियनिटी गॉट डिवाइडेड इनटू कैथलिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म। और उसके बाद थोड़े और जैसे एना बैप्टिस्ट जो थे थोड़े रेडिकल थे, और कैसे जेसुइट्स का ग्रुप हुआ, कैसे अलग अलग डिविजन्स हुए। सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, दैट दिस वाज अ टाइम पीरियड इन विच लॉट ऑफ चेंजेस केम। ओके। So if we want to have just a kind of quick timeline of what all actually took place around 1500 to 1700, तो उसमें जो major changes है वो हम यही बोल सकते हैं। एक तो मार्टिन लूथर, we also discussed that he wrote 95 theses. Then in 1522 he translates the Bible into German. And उसके बाद कैसे there were many other things not only related to, we can say, political and all, बट इसमें हमने एक पेजेंट अपराइजिंग होगी जर्मनी में, हमने ये पढ़ा था। पेजेंट जनरली अपराइजिंग कर रहे थे कि वी डोंट वांट टू पे टैक्सेस एंड वी आर आल्सो इक्वल, दिस एंड दैट। ठीक है। फिर कैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस। उसके बाद अकेडमी ऑफ साइंस वाज सेट अप इन पेरिस। एंड then one of the very important book was published, one of the very important matter was published, and it was obviously of Newton. So this was the time period, you can say, was completely full of lot of great changes. And about one similar kind of change we'll study. And the change was actually initiated by and told to us by Copernicus, ठीक है, a very very इंटेलिजेंट एंड स्कॉलरली पर्सन। अब हम बोलेंगे ऐसा इन्होंने क्या किया था कि जिसको हम रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, बिकॉज जनरली जब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं जनरली, तो हम उसको एक बहुत बड़े पॉलिटिकल चेंज के फॉर्म में डिस्कस करते हैं, और ईदर वी से समथिंग अ वेरी बिग चेंज took place, or somewhere we relate it to
a big not only political change but involving kind of war or revolt ऐसा करके. But यहाँ पे revolution का मतलब हमें समझना चाहिए a very big change. Okay, we have studied like print revolution also, industrial revolution also. मतलब bringing a very very big change in certain kind of process that was going on. ठीक है. तो अब ऐसा क्या चेंज लाए थे ये, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. एक्चुअली में क्या है, जो क्रिश्चियनिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या नोशन था, क्या आइडिया थी, क्या आइडियोलॉजी थी कि जो मैन है ना वो एक सिनर है. सिनर का मतलब क्या होता है? सिनर का मतलब होता है, सिन का मतलब होता है पाप. यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मैन है, वो बहुत ज्यादा पाप करते हैं. ठीक है. और इतना बेसिकली इतना ज्यादा करते हैं कि दे आर सेइंग कि जो अर्थ है अपना वो उससे इतना हैवी हो गया है विद द बर्डन ऑफ सिन, जिसके कारण अर्थ जो है वो क्या हो गया, इमोबाइल हो गया. ओके, यानी कि अर्थ जो है वो मूव नहीं कर रहा है. और अब ये जो क्रिश्चियनिटी की क्या आइडियोलॉजी थी कि जो अर्थ है वो सेंटर में है, इट इज इमोबाइल, एंड उसके अराउंड बाकी जो प्लैनेट्स और इवन दी सन जो है वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. दिस वाज समथिंग दैट वाज सेड बाय द चर्च एंड बिलीव्ड बाय द पीपल. बट now we will see that scientists are obviously researching for it. पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके लिए कुछ कुछ अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिए थे, but they could not prove it. But this time we will see a more, you can say, somewhere almost near to what actual system is existing in the universe, उससे related बहुत ज़्यादा जो साइंटिस्ट है उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी अपने को. अब इसमें ऑब्वियसली हम यही बोलेंगे कि सबसे ज्यादा ये जो टर्निंग पॉइंट यूरोपियन साइंस में इस टाइम पे आया था, इट वाज समवेयर डन बाय कोपर्निकस. ओके, नाउ क्या था, कोपर्निकस सेड दैट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ रोटेट अराउंड द सन. तो उन्होंने ये बोला था कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, द सेंटर ऑफ यूनिवर्स इज सन, and earth and other planets move around the sun. Okay, this was what was stated by Copernicus, obviously after his lot of research work. Okay, not like that only, obviously after lot of research work. But ये जो है ना, ही वॉज अ क्रिश्चियन बाय हार्ट, मतलब बहुत क्रिश्चियनिटी में एंड रिलीजियस पर्सन. ही वॉज अ पर्सन हु वॉज डिवाउट क्रिश्चियन, एंड ही वॉज अफ्रेड कि अगर मैं ये वाला जो नोशन अगर स्प्रेड करूंगा, अगर ये वाला नोशन मैं पॉपुलराइज करूंगा और आई टेल इट, तो क्या होगा, जो ट्रेडिशनल क्लर्जी मैन है दे विल बिकम एंग्री, और फिर उससे कैसा भी रिएक्शन हो सकता है. You know, church people were really really powerful, and if anyone said anything against them or anything against their theories, then the punishment would be very very harsh. So he was somewhere scared कि whether I should tell about this theory or not. तो इसी रीजन के क्या कारण क्या हुआ, उनकी जो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट थी, उनका जो अपना वर्क था जिसका नाम था द रोटेशन, और इनकी ओन टर्म में देखे तो दी रेवोल्यूशनरी बस. ठीक है, द रेवोल्यूशनरी बस, ये जो है जिसका मीनिंग ऑब्वियसली क्या होता है, द रोटेशन. ये जो इनकी मैन्यूस्क्रिप्ट है, इसको इन्होंने इनिशियली प्रिंट के लिए नहीं दिया. ठीक है, बट वेन ही वॉज, मतलब हिज कंडीशन वॉज वेरी बैड, ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट यू कैन से ही वॉज एट द डेथ बेड. तब इन्होंने क्या किया, ही gave this work to his follower Rheticus. जब इन्होंने अपने फॉलोअर को दिया, तब इन्होंने उसको ऑब्वियसली बोला कि नाउ यू दिस इज माय वर्क एंड यू गेट इट प्रिंटेड. Now he actually, then the book was printed, and when the book was printed, it is said that almost जैसे ही प्रिंट होके आई इसके पास बुक, उन्होंने देखी उसको, उस बुक को, एंड द वेरी सेम डे ही डाइड. मतलब समवेयर हम बोल सकते हैं एटलीस्ट हिज वर्क वाज प्रिंटेड एंड ही वाज एबल टू सी इट. अब क्या हुआ, ठीक है, आइडिया तो आ गया, प्रिंट हो गया, ठीक है, बट ये जो आइडिया है ये अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ इतना इजीली. एटलीस्ट मोर देन हाफ अ सेंचुरी लगी थी. ठीक है,
क्योंकि समवेयर अभी द पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड मे बी दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दीज स्कॉलर्स वर टॉकिंग अबाउट. अब क्या हुआ, ये जो डिफरेंस था ना बिटवीन हेवन एंड अर्थ, हेवन का हम मतलब समवेयर जैसे यहाँ पे हेवन को वी कैन रिलेट टू व्हाट वी से समथिंग बियॉन्ड डिवाइन. बट जब हम हेवनली बॉडीज की बात करते हैं तो दीज आर समथिंग एक्स्ट्रा, मतलब टेरेस्ट्रियल नहीं है, नॉट ऑन आवर अर्थ, बेसिकली इन द स्पेस एंड दी यू कैन से अराउंड, नॉट ऑन द अर्थ बट मच फार अवे फ्रॉम इट. तो ये जो डिफरेंस था बिटवीन हेवन एंड अर्थ, दिस वाज ब्रिज एक्चुअली थ्रू द राइटिंग्स ऑफ नाउ न्यू जो एस्ट्रोनॉमर्स आए थे, वो थे अपने केपलर एंड देन गैलीलियो गैलीली. अब ये जो है ये है जिन्होंने अब इस चीज पे और रिसर्च की और अपने पॉइंट्स को और प्रूव किया. नाउ द थ्योरी ऑफ द अर्थ एज अ पार्ट ऑफ सन सेंटर्ड सिस्टम वाज मेड पॉपुलर बाय केपलर. यानी सबसे पहले केपलर जो है, मतलब अब ये बना तो दिया था उन्होंने अपने कोपर्निकस ने, बट ये पॉपुलराइज और फेमस एंड लार्जली स्प्रेड कैसे हुई, बाय केपलर. ठीक है. एंड इन्होंने जो बेसिक किस तरीके से पॉपुलर किया था, थ्रू अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन जिसको हम बोलते हैं कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री. ओके, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री. इसमें इन्होंने बोला कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड सर्कल में नहीं, एलिप्सेस में मूव करते हैं. आई नो, आई थिंक यू ऑल नो कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं दे मूव अराउंड द all the planets move around the sun, not in a sphere, you can say जो circular वो होता है जो not in circular shape but they move in you, I think you all must have studied in your junior classes, ellipse shape बोलते हैं this. I think you can see it on the screen. This is a complete circle and this one, the bigger one, is a ellipse shape. तो this we have already done in our junior classes कि जो earth है and other planets they move around the sun in a ellipse kind of shape and not in circular shape. If suppose एक्चुअली में क्या हुआ था, जो कॉपर्निकस ने थ्योरी दी थी, ही समवेयर सेड दैट ऑल ऑफ द प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन इन समवॉट सर्कुलर शेप. तो ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन मेनी कंसेप्ट, जो चेंजेस आते हैं जो इन नॉट ओनली द वे इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑल द प्लैनेट्स, तो उसमें जो अलग अलग चेंजेस आते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे, जो हम बोलते हैं सीजन के चेंज या बाकी ग्रेविटेशन के कारण चेंज, उनको वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बिकॉज ही थॉट that the path is circular, but then it was proved that now it was proved by Kepler that the path is ellipse. और जैसे ही ये चीज प्रूफ की गई कि एलिप्स में है तो सब कुछ जो है प्रॉपर लाइन में आ गया, मतलब एवरीथिंग वाज क्लियर, देयर वाज नो प्रॉब्लम. ऑल द एंड दे यूज कैलकुलेशंस टू प्रूव दिस एंड दे वर एबल टू प्रूव ईच एंड एवरी पॉइंट कि अर्थ में ऐसे चेंजेस कैसे आते हैं. ऑल द चेंजेस आर समवेयर रिलेटेड टू द टाइप ऑफ मूवमेंट दैट द अर्थ टेक्स अराउंड द सन and what else, like where is the location of the moon and earth, how does it rotate, ये सारी चीजें जो है एकदम एक साथ जुड़ गई थी and all were now totally they could explain these things. okay, इसके बाद क्या किया, गैलीलियो जो है उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ऑब्वियसली ये जो डायनामिक वर्ल्ड है कैसे मूव करता है, और ये उन्होंने किया थ्रू हिज वर्क द मोशन. यानी इनकी जो वर्क का नाम था, इनकी जो बुक का था जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था सब कुछ, द नेम वाज द मोशन. ओके, नाउ दैट मींस नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे क्या हो रहा था. द जो ये स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट है, these were now proving lot of things which were earlier not proved, maybe because they did not take the final shape. okay, अब अगेन जो क्लाइमेट्स हम बोलेंगे, पूरा ये जो साइंस में रेवोल्यूशन हुआ है, इट केम व्हेन आइजैक न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी ऑफ ग्रेविटेशन. तो जैसे ही ये थ्योरी दी गई उसके बाद जो
पूरा का पूरा सिस्टम है, नॉट ओनली आवर सोलर सिस्टम बट द वेरियस फोर्सेस दैट एक्ट ऑन आवर अर्थ, और क्यों उसकी पोजीशन ऐसी है और क्यों ऐसी ही पोजीशन रहती है, all of these mysteries were solved, and these scientists were able to prove lot of things which were earlier not proved. ऑलवेज कीप इन माइंड, ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी लोगों ने ये ऐसी बातें सजेस्ट ना की हो. From you can say centuries ago, many scholars tried to prove that Earth was not the center. Obviously, they were very few, but they could not prove because they did not had pure explanation of the things to prove that whatever they were saying were correct. And also one more thing, church did not let these ideas spread so easily. Okay, because obviously church की जो पूरा concept है उस पे ही एक question mark आ जाएगा इसलिए. But this was the time when lot of revolutions were coming, people were studying, and obviously these ये जो scientists हैं, ये जो astronomers हैं, इन्होंने जितनी भी चीजें prove की है, इसके पीछे इनके पास पूरी वेल अपना स्टडी मटेरियल था, थीसिस थी, प्रूफ थे, लॉजिक्स थे, रीजंस थे. तो नोबडी कुड क्वेश्चन देम, एंड देन दे कुड easily answer कि ऐसा क्यों होता है, why is earth moving like this, why does it take this much time, this and that, everything, because everything was calculated, because everything was based on their studies. So that is why we called it as a revolution. Though obviously Copernicus started it, but then धीरे धीरे बाकी जो स्कॉलर्स इसमें एड ऑन होते रहे, उन्होंने इसमें फाइनली पूरा का पूरा जो हमारा वर्किंग ऑफ यूनिवर्स है उसको एक्सप्लेन कर दिया टू अस. दैट इज व्हाई दिस पीरियड वी आल्सो कॉल एट एज द यू कैन से रेवोल्यूशन. कहीं ना कहीं साइंस के फील्ड में भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. Now relating to somewhere it is related to this topic only. Now the our next topic वो है रीडिंग द यूनिवर्स. नाउ बिकॉज हमें पता है अब बहुत कुछ यूनिवर्स से रिलेटेड यहाँ पे रिसर्चेस हो रही हैं, एंड पीपल आर कमिंग अप विद न्यू न्यू ऑब्जर्वेशंस. तो अब जो ये थिंकर्स हैं बेसिकली ये यही बोल रहे थे कि नॉलेज वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. ड्यूरिंग दिस टाइम एक्चुअली हमेशा ये बोलेंगे कि फेथ इज समथिंग एल्स, यू कीप योर फेथ. ओके, बट जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज कैन बी अटेन्ड ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. when we observe things then only we are able to understand how they work, क्या किस तरीके से वो चीज काम करती है, उसका रिजल्ट क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, एंड व्हाट इज इट टोटली, वो हमें पता चलता है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्वियसली थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन. तो बेसिकली इन्होंने यही बोला है, जैसे गैलीलियो सेड दैट बाइबल इज बेसिकली the Bible that lights the road to heaven does not say how the heaven work. यानी ये बोला जाता है कि अब आप बाइबल को अच्छे से फॉलो करो, सारे रूल्स और उनकी जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करो, तो ऑब्वियसली दे आर टेलिंग यू द रोड टू हेवन, दैट हाउ टू गो टू हेवन, what are the things you should do in your lifetime so that you get into heaven. But the Bible is not telling us that how the heaven work, उसमें किस तरीके से पूरा उसका प्रोसेस होता है, व्हाट इज द होल प्रोसीजर एंड हाउ डज हेवन वर्क. सो बेसिकली यही बोल रहे थे कि नॉलेज इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर बिलीफ. ओके, and knowledge can be attained only through observation and experiment, and you can keep your belief also with yourself. But then when you want to get the knowledge, when you want to actually understand few things, तो आपको observation और experiments ही main तरीका है. once the scientists also showed the way, जैसे इन्होंने बताया कि ये तरीका है, obviously experiments और investigations जो हैं वो एकदम it started expanding rapidly, and especially in the field of science, physics, chemistry, biology, इन सब में अब एक तरीका जब हमें पता चल गया कि बहुत कुछ ऐसा है that we don't know, and we can actually search and we can find out new things about whatever is happening around, चाहे वो human beings हो, चाहे वो in our surroundings हो. So now started the time period where a lot of scholars were now investigating, experimenting, observing, wanting to know
मोर अबाउट एवरी सेक्शन, चाहे फिजिक्स देख लो, केमिस्ट्री देख लो, बायोलॉजी देख लो। हमें पता है जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं, इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटिंग टू आवर साइंस, फिजिक्स में हमने पढ़ा है। तो ये इसी चीज पे फोकस कर रहे थे। और हिस्टोरियंस जो है देवर ऑब्वियसली, ये जो नया अप्रोच है नॉलेज अटेन करने का, ठीक है, एंड टू नो मोर अबाउट मैन एंड नेचर, इसको जो अपने हिस्टोरियंस हैं वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, so please understand again what are they saying कि अब we are somewhere developing a scientific approach. What do I mean by scientific? थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा रीजन, मतलब हमें हर चीज के पीछे रीजन चाहिए। ओके, दिस इज समवेयर यू विल फाइंड कि एक नया काइंड ऑफ सर्च, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, इन सब पे फोकस कर रहे हैं। तो इसी को हिस्टोरियंस ने लेवल किया है कि दिस वाज द काइंड, यू कैन से इट वाज अ काइंड ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एंड दिस अप्रोच समवेयर इग्नाइटेड, या इसने स्टार्ट कर दिया, क्या स्टार्ट किया कि एवरीवन शुड एक्चुअली स्टडी थिंग्स मोर साइंटिफिकली। साइंटिफिकली यानी आप लॉजिक से ढूंढो, उसके पीछे की रीजन ढूंढो, एक्सपेरिमेंटेशन करो, ऑब्जर्व करो चीजों को। एंड इसमें एक और चीज जो हमें समझनी चाहिए कि जो नॉन बिलीवर्स थे, जो पहले भी समवेयर जिनको पूरा भरोसा नहीं था, जैसे या स्केप्टिक्स कौन होते हैं, हु वांट्स टू सर्च थिंग्स और आर अ लिटिल स्केप्टिकल, मतलब क्या होता है, यू आर अ लिटिल डाउटफुल अबाउट फ्यू थिंग्स। तो ऐसे जो लोग थे ना, उन लोगों में भी इस चीज से रिलेटेड क्या है, somewhere they were, you can say, satisfied this with this point of view, because they wanted to, this section of people wanted reason in everything, and this was their time. Now अब कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले भी हम बोलेंगे कि somewhere they did not believe totally in God, because they did not understand the concept कि कौन है God, क्या लॉजिक है इसमें, we don't believe, या हम ये चीज एक्शन क्यों करें, why should we do these kind of things। तो इस टाइम पे इन लोगों ने अब क्या किया, इन लोगों ने गॉड को रिप्लेस कर दिया बेसिकली बाय नेचर as a source of creation. Why nature? Because they are saying nature is something actually which is providing us all the necessities of life. हमें मतलब जो भी जीने के लिए जरूरी चीजें हैं वो हमें एक तरीके से कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है, और उन्होंने, नेचर ने ही हमें क्रिएट किया। तो somewhere now they are wanting or they are considering nature more powerful. बट इवन दोस जो अपने फेथ में मानते थे, अपने गॉड को मानते थे, दे वर स्टिल बिलीविंग इन देयर गॉड, बट दे वर नाउ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट डिस्टेंट गॉड, यानी कुछ और भी है जो डायरेक्टली जो है ह्यूमन बीइंग्स या जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हमारा अर्थ है, उसको टोटली रेगुलेट या कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज नॉट टोटली कंट्रोलिंग द लाइफ ऑफ पीपल, though they believe in God, that this is their God and this is their Christianity, these are their beliefs, this should be followed, but now they again believe that simultaneously something is, you can say, there is also a distant God, a God standing very far off, which does not actually totally control the human beings and their life. So such idea now basically were popularized through scientific societies and scientific culture. ये जो अब पब्लिक डोमेन में कॉमन लोगों तक भी स्प्रेड हो रहा था थ्रू वेरियस मीन्स, जिसके वी हैव एग्जांपल्स लाइक पेरिस एकेडमी थी 1670 में फॉर्म हुई थी, इस्टेब्लिश, और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है, इन्होंने ये बेसिकली नेचुरल साइंसेज और नेचुरल नॉलेज से रिलेटेड जो स्टडीज करवाती थी, 1662 में फॉर्म हुई थी। ये लोग क्या है, लेक्चर्स कंडक्ट करवाते थे और एक्सपेरिमेंट करवाते थे, वो भी पब्लिक व्यूइंग के लिए, यानी लोग, कॉमन लोग जो है इसको आके देखें और समझें। So with this actually they were wanting that people understand the importance of experimentation, of observation, of having a scientific kind of point of view. Okay, सो ये तो है बेसिकली कि किस तरीके का रेवोल्यूशन आया था, कितने चेंजेस आए थे, और कैसे लोगों का पूरा जो चीज़ों को देखने का तरीका है उसमें एक साइंटिफिक टच आ गया था। एंड इट डज नॉट मीन
प्लीज कीप इन माइंड, इट डज नॉट मीन कि रिलीजन जो है टोटली लोग एकदम बिलीव नहीं कर रहे थे, नो, नाउ पीपल वर कीपिंग इट सेपरेट, नॉलेज इज समथिंग एल्स एंड देयर फेथ इज समथिंग एल्स, ओके, दिस वाज व्हाट वाज मोर important during this time period. Okay, so then after this we are left with the last topic of this chapter, and as the topic you will be able to understand, as the topic suggests कि क्या European Renaissance actually existed in the 14th century or not. इसमें we'll discuss about few of the important things that कैसे हम ये बोल सकते हैं, जैसे few scholars are saying okay it had great changes, but how can we say that suddenly we can use the term Renaissance कि एक बहुत बड़ा change आया था, और कैसे हम एक दूसरे time period को dark age बोल सकते हैं, is it correct or is it not? This is all that will be included in our next topic. Okay, and the next topic we'll be covering tomorrow, so that we can do it very nicely, and with that we'll be able to complete our chapter. So if you have any doubt regarding the topic that we have covered, feel free to ask. Just give this portion and reading and come back with your problems, and we'll solve all your problems. Okay, so this is it for today's class. Now we'll meet in next class.